वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो फ्रेंड्स एएससीपीआई एग्जाम्स का रिव्यू भी है। तो अमेरिकन सोसाइटी क्लिनिकल पैथोलॉजी जो एग्जाम होता है उसका रिव्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ फ्रेंड्स। ये सभी आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक देखे रहेंगे और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट्स मेरे को कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी आप देखेंगे, वहाँ लिंक दिया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन से इनसफिशिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन विल रिजल्ट इन ऑप्शन नंबर ए फॉल्स इंक्रीज इन हेमाटोक्रिट वैल्यू, बी ए फॉल्स डिक्रीज इन हेमाटोक्रिट वैल्यू, सी नो इफेक्ट ऑन हेमाटोक्रिट वैल्यू, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आंसर नंबर ए। Insufficient centrifugation does not pack down the red blood cells. Therefore, the hematocrits, which is the volume of packed cell, will increase. So, correct answer number is A. Option number A, a false increase in hematocrits HCT value. Insufficient centrifugation का रिजल्ट जो होता है, अगर जो सेंट्रीफ्यूगेशन उसको सफिशिएंट या पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसमें जो हेमेटोक्रिट्स है उसकी वैल्यू फॉल्स रूप से बढ़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन, वेरिएशन इन रेड सेल साइज ऑब्जर्व ऑन द पेरिफेरल स्मीयर इज डिस्क्राइब्ड एज ऑप्शन नंबर ए एनिसोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिया, पोकिलोसाइटोसिस एंड pleocytosis, and correct answer number A, anisocytosis. A mature erythrocyte is approximately 7 to 8 micrometer in diameter, and variation in normal size is denoted by the terms anisocytosis. Hypochromia is a term that indicates increased central pallor in erythrocytes, and poikilocytosis denotes variation in red cell shape. So correct answer number is A, anisocytosis. Next question number third, which of the following is the peripheral site for bone marrow aspiration and biopsy in an adult? ऑप्शन नंबर ए इलियक क्रिस्ट, बी स्टर्नम, सी टिबिया, डी स्पाइनस प्रोसेस ऑफ अ वर्टिब्रा। एंड करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आंसर नंबर ए इलियक क्रिस्ट। द इलियक क्रिस्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बायोप्सी. दिस साइट इज द safest and most easily accessible with the bone just beneath the skin, and neither blood vessels nor nerves are in the vicinity. So correct answer number is A, iliac crest is the most useful or preferable sites for bone marrow aspiration. Question number 4. What phagocytic cell produce lysozymes that are bactericidal? Option number A eosinophils, B lymphocytes, C platelet, and D neutrophils. And correct answer friends, answer number D neutrophils. Neutrophils are highly phagocytic and release lysozymes, peroxidase and pyrogenic proteins. Eosinophils migrate to sites where they are in an allergic reaction or parasitic infestations and releasing peroxidase and pyrogenase and other enzymes, include an oxidase that neutralized histamines. They are poorly phagocytic and do not release lysozyme. So correct answer number is the D neutrophils. Next question number 5. When an erythrocyte containing iron granules is stained with Prussian blue, the cell is called A.
spherocytes, leptocytes, cystocyte and siderocyte. And correct answer number D, siderocytes. Siderocytes are red cells containing iron granules and are visible when stained with Prussian blue. Next, question number 6. A decreased osmotic fragility test would be associated with which of the following conditions? Option number A, sickle cell anemia, B, hair dietary, spherocytosis, hemolytic disease of the newborn, and option number D है acquired hemolytic anemia. And correct answer number is A, sickle cell anemia. Osmotic fragility is the decreased when numerous sickle cell and target cells are present and increased in the presence of spherocytes. Spherocytes are a prominent feature of hair diary, spherocytosis, hemolytic disease of the newborn, and acquired hemolytic anemia. The osmotic fragility test is increased in the presence of spherocytes, whereas this test is decreased when sickle cells, target cells, and the other poikilocytes are present. So correct answer is the A, sickle cell anemia. Next, question number 7. What effect would using a buffer at pH value is 6.0 have on a right stand smear? Option number A, red cells would be stand to pink. B, white cell cytoplasm would be stand to blue. Red cell would be stand to blue. And option number D, red cell would lies on the slide. And friends, correct answer. The pH of the buffer is crucial in Romanowski stand. When the pH is too low, 6.4, the red cells take up more acid dye, example for eosin, and becoming too pink. So leukocytes also show poor nuclear details when the pH is decreased. So correct answer is the A, red cell would be stand to pink. Next, question number 8. A falsely elevated hematocrit is obtained. Which of the following calculated value will not be affected? Option number A, MCV, B, MCH, C, MCHC, and D, red cell distribution wide. And correct answer, friends, answer number B. The MCS hemoglobin B into 10 oblique RBC count and is not affected by the hematocrit. So correct answer is the B, MCH. Question number 9. A Miller disc is an ocular device used to facilitate containing of platelets, reticulocytes, sickle cell, nucleated red blood cells. And correct answer, friends, answer number B. The manual reticulocytes count involves the counting of 1000 RBCs. The Miller disc is a reticle grid that is placed in the eyepiece of the microscope and divides the field into two squares, one being 9 times larger in size than the other. Reticulocytes are enumerated in both the squares. Mature red cells are counted in the smaller one. So correct answer is answer number B, reticulocytes. Next, question number 10. All of the following factors may influence the
erythrocyte sedimentation rates excepts option number A, blood drawn into a sodium citrate tube, B, anisocytosis, poikilocytosis, and C, plasma proteins, and D, caliber of the tube. And correct answer friends, answer number A, EDTA and sodium citrate can be used without any effect on the ESR. So anisocytosis and poikilocytosis may impede Rule-Ox formation, thus causing a low ESR plasma protein, especially fibrinogen and immunoglobulins enhance Rule-Ox, increasing the ESR. So reference ranges must be stabilized for different caliber tubes. So correct answer is answer number A, blood drawn into a sodium citrate tubes. तो फ्रेंड्स पार्ट 1 यहीं तक मैं लेके आया हूँ। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द स्टेयरिंग मेथड। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ऐसे ही मस्त वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन के नोटिफिकेशन के ऊपर जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको पीडीएफ्स की आवश्यकता हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ASCPI एग्जाम नोट्स, इसके साथ साथ MLT अड्डा और मेडिकल ट्यूबर, ये तीनों मेरे टेलीग्राम के चैनल है जिसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ्स फ्री में मिलेंगे। इसके साथ डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।